kind of SOC analysts, what they do is they put this controls in place, they fine tune them, they kind of look after those controls and looking into the alerts and what sort of alerts it generates, whether false positives, false, they sift it through, they triage them. But basically क्या चल रहा होता है, एक्चुअली जो सिस्टम्स होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं, उसमें यूजुअली एंटीवायरस, एंटी मालवेयर एंड सॉर्ट ऑफ अदर सिस्टम्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक हमारा एंटी वायरस और एंटी मालवेयर पे है तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट सॉक में ही डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि मुझे ये है कि एंटी वायरस और एंटी मालवेयर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर इररेलेवेंस हो जाती है अगर आप इसको इंडस्ट्री लेवल पे नहीं करते हो कि इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहा है, या फॉर एग्जांपल वी आर फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन शॉक, तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो इसमें ये चीजें मतलब कैसे वो कर रही होती है। ऑब्वियसली बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसके लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डू हैव सॉर्ट ऑफ अ लिटिल और नो नॉलेज ऑफ एंटी वायरस का तो पता ही होता है सबको, एंटी मालवेयर का पता हो या ना हो, पर एंटी वायरस का सबको पता होता है। जैसे कि इंस्टॉल भी आप लोग करते हैं, बिट डिफेंडर हो गया और इस तरह काफी सारे अदर्स वर्जन्स भी। उसमें गलती ये भी कर बैठते हैं कि ऑन ऑन अ बेसिक लेवल, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल के इंस्टॉल कर लेते हैं वो वाला क्रैक्ड वर्जन्स, तो वो खुद क्रैक्ड होता है तो वो दूसरे को क्या प्रोटेक्शन देगा, उसके सिग्नेचर्स वगैरह आउटडेटेड होते हैं और वो इट गिव्स नो प्रोटेक्शन एट ऑल। तो इसीलिए जो क्रैक्ड वर्जन्स हैं वो तो मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, वो तो ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा, थोड़े पैसे खर्च लें और एक प्रॉपर जो है लेजिटिमेट जो आप फोकसिंग ऑन के हाई लेवल पे कौन से यूज़ हो रहे होते हैं और क्या उनका वो सारा जो है सेटअप कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो एंटी मालवेयर जो है और एंटी वायरस सॉल्यूशंस जो हैं, दे आर बेसिकली क्वाइट एसेंशियल टूल्स इन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रोटेक्ट करने में एंड पॉइंट्स, नेटवर्क्स और डेटा को फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ साइबर थ्रेट्स, including viruses, malware, spyware, and ransomware. So, by implementing robust antivirus and anti-malware strategies, SOCs can enhance the overall security posture and safeguard critical assets. So, as I said, it does a very important role, and I would say, crucial role, basically critical role play करते हैं ये जो solutions हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो इसी में ही कवर हो जाती हैं। ऑल्दो वी हैव अदर टूल्स एज वेल, लाइक उसमें आपके पास जो है कुछ थ्रेट इंटेल से रिलेटेड होते हैं, कुछ एनालिटिकल बिहेवियर एनालिटिक्स होते हैं जो यूज़र बिहेवियर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, कुछ सिर्फ स्पेसिफिकली फाइल शेयर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और कुछ जो हैं वो आपके जो है जनरली जो लॉग्स और इवेंट्स वगैरह हैं वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि सीम्स वगैरह प्लेस किए होते हैं वहाँ पे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एज हनी पॉट एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि क्वालिस है, वो आपका वनरेबिलिटी मैनेजमेंट बेसिकली। सो इट डज ऑल सिफ्ट थ्रू ऑल दीज वनरेबिलिटीज इन सिस्टम। तो चलें, लेट्स सी व्हाट इट डज एंड इम्पोर्टेंस क्या है इसकी सिक्योरिटी ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंटीवायरस और एंटी मालवेयर solutions are critical components of a comprehensive security strategy within the Security Operations Center. These tools play a vital role in detecting, preventing, and mitigating a wide range of cyber threats, including malware, viruses, and ransomware that can compromise our organization networks or endpoint or data. तो कौन बेसिकली डिटेक्ट भी कर रहे होते हैं, प्रिवेंट भी कर रहे होते हैं, मिटिगेट भी कर रहे होते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है कि डिटेक्ट करना इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? एनी सिस्टम कैन डिटेक्ट एनीथिंग, ओके दिस इज अ थ्रेट, बट थिंग इज हाउ टू प्रिवेंट या मिटिगेट, कैसे आप उसको करते हो, ठीक है? उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, सो दैट इज अनदर थिंग, ये अक्सर एंटी वायरसेस कर रहे होते हैं, बट मिटिगेट जो है वो बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं जो उसको मिटिगेट भी करते हैं, बेसिकली ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि दे प्रोवाइड सॉल्यूशंस अराउंड दैट कि उसको मिटिगेट कैसे किया जाए। तो ये नेटवर्क पे भी होता है, आपके एंड पॉइंट जो डिवाइसेस हैं दीज आर एंड पॉइंट्स फॉर देम, ठीक है? वेदर इट कुड बी एन एंड पॉइंट फॉर अ सर्वर, एंड पॉइंट आपकी डिवाइस का, या फिर आपकी इट वुड बी एनी डिवाइस विच इज नेट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, तो वो आपके एंड पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी की अलग फील्ड है, और जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी गाइज हैं दे जस्ट लुक आफ्टर द एंड पॉइंट सिक्योरिटी। और जो आपके ये जो दूसरी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अदर सॉल्यूशंस जिसमें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड स्टफ लाइक दैट, दैट इज समथिंग। तो ये वाइड रेंज ऑफ टूल सेट्स होते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो इन रिलेशन टू एंटीवायरस या एंटी मालवेयर ये कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, ये बेसिकली आपके एंड पॉइंट्स पे होते हैं, चाहे वो नेटवर्क पे हो या किसी भी डेटा
लेक पे या कोई ऐसा डेटा सेट ऑफ पूल कि जी वहाँ पर जिस तरह डेटा बेसिस हैं, दैट इज लाइक टू सेफ गार्ड, देन ऑब्वियसली यू गॉट टू पुट समथिंग इन प्लेस। अच्छा, फायरवॉल तो अपनी जगह पे ठीक है, फायरवॉल भी, और फायरवॉल टू सम एक्सटेंट वही रोल प्ले कर रही होती है बेसिकली। ये भी प्रिवेंट, डिफेंड और वो मिटिगेट स्टफ जो है, आजकल आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स आ गए हैं, सो दे डू द सेम जॉब एज वेल। उसमें भी सिग्नेचर्स अपडेट होते हैं एंटीवायरस के एंड ऑल दैट, सो दे प्ले द सेम रोल बेसिकली, अगर फायरवॉल की भी बात की जाए। और शॉक इस पे बड़ा हैवीली रिलाई करता है, और जो है ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है आपकी ट्रैफिक को, एंड पॉइंट एक्टिविटीज को जो अपने डिवाइसेस पे कर रहे होते हो, एनी मलिशियस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी वुड बी क्विकली डिटेक्टेड एंड वुड बी फ्लैग्ड। और सिस्टम लॉग्स होते हैं, जो सस्पिशियस पैटर्न्स और एनोमलीज उसमें देखी जाती हैं, वो भी उसमें चेक हो रही होती हैं। अच्छा, और उसमें क्या होता है कि काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं थ्रेट्स और इम्पैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, और उसमें उसके एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में। और इसमें फर्दर ये होता है कि अगर हम एंटीवायरस को इंटीग्रेट करते हैं, एंटी मालवेयर को इंटीग्रेट करते हैं अपने सीम्स में, ठीक है, सिक्योरिटी जो सीम्स होते हैं, तो हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाती है थ्रेट लैंडस्केप की, कि क्या क्या थ्रेट्स चल रहे हैं, और इन्फॉर्म्ड जो है हम डिसीजंस उस पे बना सकते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात की जाए टाइप्स की इनकी, तो एज ए सेट कि ये तीन तरह के होते हैं। एक आपके एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो सिर्फ एंड पॉइंट पे लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें आपके इनको हम ईपीपी से भी डिनोट करते हैं, एंड पॉइंट प्रोटेक्शंस, comprehensive security solutions installed on individual devices such as desktops, laptops, mobile devices to detect। आजकल मोबाइल डिवाइसेस पे भी स्टार्ट हो गए हैं, लाइक जिम्पोरियम, अगर इफ यू हर्ड और नॉट, आप सर्च करें तो जिम्पोरियम। और ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो बेसिकली ये मोबाइल डिवाइसेस पे वो क्या करता है कि दैट्स यू गॉट टू इंस्टॉल सम सॉर्ट ऑफ एन ऐप, एंड देन आप कंपनी पोर्टल से कनेक्ट हो जाते हो बेसिकली, तो वो आपका बैकएंड पे द गाइज इन द सॉक दे वुड बी मॉनिटरिंग के, इट्स नॉट लाइक कि डिवाइस आपकी मॉनिटर की जा रही, इट्स जस्ट लाइक के एनी सॉर्ट ऑफ malicious एक्टिविटी डाउन देयर, तो वो बेसिकली कुछ फ्लैग्स होते हैं। तो ये इज क्वाइट कॉमन नाउअडेज, जिस तरह से थ्रेट्स बढ़े हैं, ऑब्वियसली कनेक्टेड डिवाइसेस बेसिकली नेट, जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे बड़ा जो आजकल रिस्क है, ये डिबेट्स भी इस पे काफ़ी चल रही हैं कि जी इसको कैसे कॉम्बैट किया जाए। क्योंकि हर डिवाइस एज रिमोट वर्किंग ग्रोज एंड ऑल दैट, तो वो आपके जाके नेटवर्क को हिट कर रही है कहीं से, घर बैठ के भी, कहीं पे भी। पहले तो होता था ना कि आपका वाइट लॉन होता था उसके अंदर ही ऑफिस के, और वो क्वाइट प्रोटेक्टेड, बट वाईफाई डिवाइसेस एंड रिमोट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू योर नेटवर्क नाउ। तो उसी तरीके से थ्रेट लैंडस्केप भी चेंज हो गया है, और उसमें थ्रेट लैंडस्केप जैसे ही चेंज होता है, ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है, तो फिर नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। आई विजिटेड, इट हैपेंड टू मी कि मैं कल उधर गया था, इंफॉर्मेशन InfoSec Europe, ठीक है, that is kind of a conference and an exhibition। उसमें 90% तो बेसिकली वो थे जो अपना वेंडर्स थे, जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बेसिकली, दे आर सेलिंग देयर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, दे आर मार्केटिंग देयर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स देयर। तो देयर आर thousands of companies जो वहाँ पे आई हुई थी, और इसी तरीके से there are thousands of security professionals, they were there from different companies, from governments, from semi-government or from the private corporations। तो वो क्या था, बेसिकली वो यही था कि ये टूल सेट्स हैं, अच्छा इसमें क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, आप क्या लेकर आए हो, यू आर लाइक ऑन टॉप ऑफ द अदर वन, क्या उसका मतलब कंपैरिजंस, कि हाउ डिड यू काइंड ऑफ इम्प्रूव। एक वक्त था कि व्हेन वी यूज्ड टू विजिट दैट, क्वाइट हैंडफुल ऑफ हंड्रेड वहाँ पे होते थे, लेकिन अब थाउजेंड्स में बात चली गई है, और बहुत कम वेंडर्स होते थे, और बहुत कम सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स थे। लेकिन अब एक एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स पे फर्दर उसके जो एनहांस्ड वर्जन्स आ गए हैं, जिस तरह के, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पेन टेस्टिंग, राइट, पेन टेस्टिंग मैनुअली किसी वक्त में हुआ करती थी, अब वो नहीं है। अगर आपको कोई कहेगा ना कि पीपल आर सेलिंग कोर्सेज, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी जो है वो दे डोंट केयर अबाउट दैट के, लेकिन एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, वो यही है कि आजकल मैनुअल नहीं बल्कि ऑटोमेटेड पेन टेस्ट टूल सिस्टम्स आ गए हैं, कि आपके एक पोर्टल होता है जिसके अंदर सारे आपके क्लाइंट्स का इन एंड आउट, कि जी दिस इज, उनकी सारी डिवाइसेस भी स्कैन उसमें हो जाती हैं, उसमें सारी उनकी वनएबिलिटी रिपोर्ट्स भी, और वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा होता है, वनएबिलिटी डेटाबेस से, और फिर उसके अंदर उनकी रिमीडिएशंस भी बताई जा रही होती हैं, उनके फिर डार्क ट्रेस से भी उनके फेच किया जा रहा होता है डाटा उनकी कंपनी के बारे में। तो ये सारे एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल में उनको वो पोर्टल रिपोर्ट भी जनरेट कर देती है, वो आप पीछे सिस्टम से इंटीग्रेट भी हुई होती हैं काफ़ी सारे, और आप उस पर ईजिली बेसिकली यू परफॉर्म पेन टेस्टिंग फॉर वेरियस कंपनीज एट द सेम टाइम।
तो ऐसे वहाँ पे डिस्प्ले में मतलब so trend is changing basically. So from a donkey job to like kind of an automation, it's a part of everybody was talking about AI. Microsoft Copilot was on display there. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और AI को अभी सही तरीके से तो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, एंड ऑल ऑफ देम दे आर जस्ट काइंड ऑफ, ओ यस वी आर ऑन टॉप, लुक एट दैट, लुक एट दिस, दे आर जस्ट काइंड ऑफ ऑन डिस्प्ले। ठीक है, बट जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे चलती जाएगी, उसी तरीके से फिर फेड होता जाएगा ये कॉन्सेप्ट, और फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नई हाइप आ जाएगी। तो साइबर इज ऑलवेज इन द लूप, सब में साइबर प्ले रोल प्ले कर रही होती है अपना, तो दैट्स वाई साइबर में, चाहे वो आपका ये ब्लॉकचेन है, चाहे वो आपका एआई है, चाहे वो आपका इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो साइबर से हटके हो नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो साइबर प्लेज अ क्रूशियल रोल, चाहे वो आईओटी आपका हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, तो all these things are basically comes under sort of cyber umbrella. अगर cyber protection नहीं दी जाएगी इन चीज़ों को, तो there would be a chaos. These are failed, right? So people wouldn't be using them at all, because they are not safe using those sort of technologies. So that's why cyber is integrated in every single platform down there. Endpoint की बात मैं कर रहा था, तो a lot of devices including the mobile devices उससे connect होती हैं endpoints आपके, इनको हम endpoints कहते हैं, और उसको जो है रिमीडिएट किया जाता है वाइड रेंज ऑफ साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट, हो इंक्लूडिंग वायरसेस, मालवेयर, रैनसमवेयर, और ये आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहे होते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड थ्रेट डिटेक्शन कैपेबिलिटीज होती हैं इनके अंदर बिल्ट इन एंड पॉइंट्स के, टू सेफ गार्ड द एंड पॉइंट्स। अच्छा, और एक जो नेटवर्क बेस्ड है, तो नेटवर्क बेस्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो ये कि ये डिप्लॉय जहाँ पे होते हैं वो थोड़ा सा फ़र्क होता है कि ये कहाँ पे इनकी डिप्लॉयमेंट होती है, कहाँ से नेटवर्क ट्रैफिक को बेसिकली उन्होंने कैप्चर करना होता है। इट कुड बी एट द एंड ऑफ, एट द मिडल ऑफ डीमिलिटराइज्ड जोन, डीएमजीज, या आपके नेटवर्क के अंदर उसके दरमियान में, या फिर आपके नेटवर्क के बाहर। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो एक तो वो एंड पॉइंट पे था ना कि एंटी माइलेशन, अब ये मैंने फायरवॉल, क्योंकि नेटवर्क जहाँ पे आ जाएगा ना, वहाँ फायरवॉल का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब वो नेटवर्क डिवाइस है। एक एंड पॉइंट वाली हो गई, एक नेटवर्क वाली, तो फायरवॉल्स बिल्ट इन सॉर्ट ऑफ एंटी मालवेयर और एंटी वायरस कैपेबिलिटीज नाउअडेज, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। और इनको हम बाद में चल के देखेंगे कि कौन कौन से इंट्रूजन प्रिवेंट, बहुत फेमस भी एक चेक पॉइंट की बहुत यूज़ हो रही हैं, और ऑब्वियसली सिस्को स्टिल प्लेज अ मेजर रोल इन द मार्केट। इसके अलावा आपके पास जो है F5 की हैं, इनके लोड बैलेंसेस भी बहुत यूज़ होते हैं। इफ somebody doesn't know what load balancer is, तो लोड बैलेंसर बेसिकली आपका जो सर्वर का लोड है वो बैलेंस कर रहा होता है। So basically, yeah, network based solutions are different than the endpoint protection platforms, and we use at the endpoint various sort of other sort of detections, and जिसमें कि there are various companies who provide these services, right? CrowdStrike भी है उसके अंदर, और आपके पास जो है ये Falcon sensors, उनके काफ़ी जो है वो फेमस प्रोडक्ट है, जो एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, एंड देयर सो मेनी अदर्स देयर। इसी तरह नेटवर्क बेस्ड एज आई सेड कि फायरवॉल्स बिल्ट इन कैपेबिलिटी ऑफ एंटी वायरस एंड एंटी मालवेयर, और उसमें चेक पॉइंट की फायरवॉल्स क्वाइट जो है वो क्वाइट यूज्ड इन द मार्केट। और ये आप सर्च कर सकते हो जब आप इनकी वेबसाइट्स पे जाओगे, जैसे कि मैंने नेटवर्किंग में कहा था सिस्को की, आप देखें कि कौन कौन से राउटर्स हैं, कौन कौन के स्विचेस हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं बेसिकली, कि सिक्योरिटी में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली हमारा फोकस तो सिक्योरिटी है अल्टीमेटली। इसी तरह क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस भी होते हैं। क्लाउड बेस्ड में क्या होता है कि आजकल क्लाउड बहुत इन है, एवरीबॉडी इज माइग्रेटिंग देयर डेटा टू द क्लाउड, चाहे वो सर्वर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मूव कर रहे हो अपना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस उन्होंने बाय किया हो क्लाउड का मॉडल, या फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का लिया हो कि जस्ट दे आर पुलिंग आउट द सॉफ्टवेयर, या फिर वो कह लें कि आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस उन्होंने लिया हो कि अपना सिर्फ प्लेटफॉर्म क्लाउड पे वो रन कर रहे हो। सो ये हाइब्रिड काइंड ऑफ मॉडल्स भी होते हैं इसमें। सो सम आर यूजिंग बोथ, लाइक उनके ऑन प्रेमिसेस भी होता है, उनका क्लाउड में भी फुटप्रिंट होता है। क्लाउड इज क्वाइट पॉपुलर। अब तो ये जब शुरू हुआ था देन इट वाज अ ह्यूज थिंग। नाउ क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सॉल्यूशंस एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड ऑल दैट, और क्लाउड प्रोवाइडर्स में जैसे कि AWS, एजोर, और साथ में इसके साथ एक और है गूगल का CGP, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, GCP और CGP whatever, and there is another one Chinese based which is Alibaba, that is another cloud provider. तो वेल अलीबाबा ई कॉमर्स में तो बहुत यूज़ होता है। कम टू नो दिस अबाउट 10 years back, right? And I used to kind of procure a lot of technology related products, but
एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको शुरू में नहीं पता होता कि ये कहाँ तक इसकी जो है वो रीच होगी, और एट वन पॉइंट ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी, या टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा कह लें कि काम शुरू हो जाएगी। जैसे आप 10-15 साल पहले नहीं होता था इतना, बट बहुत सारी चीज़ें हमने वी गो थ्रू आवर हैंड्स, बट हम नेवर एवर उसका पोटेंशियल हमें उस टाइम नहीं पता था। बट नाउ लुक एट देम कि वो किस किस लेवल पे वो चले गए, तो यू नेवर नो। सो टेक्नोलॉजी कैन मेक यू रिच, टेक्नोलॉजी कैन प्रिवेल, टेक्नोलॉजी जिसको आप lenient समझ रहे होते हैं, जो अडॉप्ट कर लेता है, अर्ली अडॉप्टर्स इज ऑलवेज बी बेनिफिशियल। हम देखिए एक डर तो होता है, एवरीबॉडी इज बिट स्केर्ड। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, देयर आर स्केयर मॉन्गर्स कि जी ये इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, जिस तरह एआई के बारे में अब आजकल है। बट एआई इज ब्यूटीफुल थिंग, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होगी, बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर जाएगी। और देन द द ओल्ड वंस नेवर काइंड ऑफ अडॉप्टेड इट, या इसी तरह वो जो है उसको नहीं वो कर पाए, तो वो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं हमेशा। देन दे अल्टीमेटली दे कम डाउन टू दैट, व्हाई नॉट यू शुड स्टार्ट यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजीज एट देयर अर्ली स्टेजेस। तो इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट कि जैसे आप वीडियोस या अपना, पीपल यूज टू बी वेरी के रिजर्व थे कि जी हमें हमने ये जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं, ये तो वी नॉट गोना काइंड ऑफ, सम पीपल वर कैमरा शाय, सम पीपल वर सो मेनी अदर रीजंस कि नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस एंड दैट। बट लुक एट इट नाउअडेज, एवरीबॉडी इज डूइंग द पॉडकास्ट, एवरीबॉडी इज डूइंग दिस, एवरीबॉडी इज ऑन देयर टू कन्वे देयर बेसिकली अ मैसेज। हाँ, अगर उसमें वैल्यू है तो आई ओनली कंसिडर दोज हु प्रोवाइडिंग वैल्यू, नॉट जस्ट हैंकी पैंकी जो अपना एंटरटेनमेंट स्टफ जो है ना, वो आई ट्राई टू कट दैट आउट ऑफ इट, बिकॉज दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो if you value time, it you would be basically, there will be no regrets, but if you don't value that, then obviously there will be some regrets down the line। और ये होता है। तो ये जो सोशल मीडिया का अब्यूज मतलब ये साथ साथ ही चल रहे होते हैं, पीपल would need to understand that कि हु इज प्रोवाइडिंग यू द वैल्यूएबल कॉन्टेक्ट जो है, राइट, आपसे। और अनदर ब्यूटी ऑफ इट कि जो आप देख रहे होते हो या जो आप रिसर्च कर रहे होते हो, इट वुड स्टार्ट शोइंग यू दैट दैट इज एन एल्गोरिथम बिहाइंड इट, राइट। तो और दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इवन द कुकीज एंड ऑल दैट, कॉन्सेंट आपसे ली जाती है, लेकिन वो यही चीज़ हो रही होती है कि दे सेव योर प्रेफरेंसेस, दे सेव योर browsing sessions, and then they throw you out the same sort of stuff। तो खैर दैट इज कम्प्लीटली अनदर sort of a टॉपिक जिसमें प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एनी डिवाइस which we are carrying all the time, literally 24/7, even during our sleep, it does somehow basically captures our movements, capture our voices, capture, or even if you are not really careful, then it can even capture your camera। So these are the things, but some are doing it under legitimate consent cover, or legally उसको करके bind करके, some people like big companies they are using it, जैसे गूगल हो गया, and some other companies, to name a few। ये बेसिकली वही होता है कि प्राइवेसी इन्वेडर्स, आई वुड से, कि आप जो भी बोल रहे होंगे, इट वुड हैव बीन कि आप उसके एड्स देखना शुरू हो जाओगे। आप डिस्कशन कर रहे हो, वेदर यू आर सिटिंग इन विद इन द फैमिली एनवायरनमेंट, या आप अपने दोस्तों बैठे हो, आप कुछ भी बात कर रहे होगे, यू वुड सी कि आपके फ़ोन पे टारगेटेड जो एड्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे उस पर चलना। सो दैट इज़ योर माइक्रोफोन। वेल, एज आई सेड, दैट्स कंप्लीट अदर टॉपिक। सो क्लाउड बेस्ड की बात हो रही थी, तो क्लाउड इज देयर वाज एट दैट वन पॉइंट इन टाइम, अभी भी है, बट बहुत इसका था एक ह्यूज इम्प्रेशन कि जी क्लाउड में जाना है। क्लाउड सर्टिफिकेशंस आर स्टिल क्वाइट, वैलिडिटी उनकी अभी भी है, और दे आर क्वाइट ऑथेंटिक समझी जाती है इंडस्ट्री में। तो ये यही चीज़ है कि उसमें जो एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, दे आर अडॉप्टेड फॉर द क्लाउड सॉल्यूशंस। और उसमें उनकी स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी होती है, ताकि वो एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आपको दे सकें। जिस तरह एक पोर्टल दे दिया जाता है क्लाउड में कि ये जी आपकी डिवाइसेज हैं जो क्लाउड से कनेक्ट है, और ये उसकी जो है वो इस सोल्यूशन का बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ क्लाउड से इनग्रेस और आउटग्रेस ट्रैफिक जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा, या उसको मिटिगेट करेगा आपके क्लाउड से रिलेटेड जो थ्रेट्स होंगे। तो क्लाउड पे लैदा वो कनेक्टर्स या एजेंटलेस या एजेंट्स कह लें। व्हेन आई से एजेंटलेस, दैट्स अनदर टर्मिनोलॉजी यूज्ड अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ से डेटा एक्सट्रैक्ट ऑब्वियसली कर रहे हो, थ्रेट रिपोर्ट्स या फ्लैग्स वो जो करता है, तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ उस डिवाइस पे या उस कनेक्शन पे कहीं ना कहीं आप बैठे होगे, तो आपको वो सेंड एंड थ्रू कर रहा होगा ना, तो दैट इज़ योर एजेंट बेसिकली इंस्टॉल्ड। ये इंस्टॉल्ड होते हैं, बल्कि इंस्टॉलेशन भी होती है कि आप एक जगह एक ही सेंट्रलाइज्ड उससे बैठ के सर्वर से अपने डिवाइस पे वो डिप्लॉय कर देते हो, या फिर उसकी
मैनुअल डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो और ये है कि व्हाट एल्स डज इट प्रोवाइड, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो ये सिग्नेचर्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं क्लाउड पे ही है, और रिमीडिएशन पॉलिसीज जो उसके अंदर डाली जाती हैं। सिग्नेचर्स एज आई सेड के सिग्नेचर्स वो होते हैं बेसिकली जो जो वायरस एंटीवायरस के बेसिकली लेटेस्ट जिस तरह अपडेट्स होते हैं ना, सिमिलरली ये सिग्नेचर्स होते हैं कि नए नए जो वायरसेस हैं या उनके उनके सिग्नेचर्स उसमें फिट किए जाते हैं टू डिफेंड अगेंस्ट दोज वायरसेस। तो सिग्नेचर्स अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है उसमें। इसी तरह फिर रेमेडिएशन पॉलिसीज डिफाइन होती हैं, रूल्स बनते हैं उसके firewalls के। So these cloud-based platforms can offer advanced threats detection, automated incident response, and seamless integration with other security tools in the security operation centers. तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स एज आई सेड हमने पीछे इसीलिए ये सॉक का शुरू कर वो करवा दिया है कि ये सब रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स उसके साथ चल रहा है। और ये सारी जो सॉल्यूशंस हैं, वेदर इट्स एन एंड पॉइंट बेस्ड सॉल्यूशन, नेटवर्क बेस्ड सॉल्यूशन और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस फॉर मालवेयर और एंटीवायरस। तो इनको इनकी जो इंटीग्रेशन है क्लाउड पे बनिस्बत दूसरे उसके काफ़ी जो है वो इजी भी होती है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी इसकी हो जाती है, और ये अपडेट करने में भी जो है इट अपडेट्स ऑटोमेटिकली और आई वुड से ऑन स्केड्यूल्ड, जो है आपके उस पे जो स्केड्यूल आप उस पे चलाते हो। Endpoint protection platforms, right? So EPPs. These are comprehensive security solutions installed on individual devices within the organization, such as desktops, laptops, as we have कर चुके हैं. These platforms play a crucial role in detecting, preventing, and remediating a wide range of cyber threats, including viruses, malwares, and ransomware. EPPs provide real-time monitoring. अच्छा, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग बेसिकली ये नहीं होता कि लैग नहीं होता कि एक चीज़ को उसने रिकॉर्ड कर लिया, कंप्लेंट किया, उसके बाद उसने आपको वो शो किया, नहीं ऐसा नहीं, ये रियल टाइम होता है कि स्ट्रेट अवे बेसिकली वॉट एवर द ट्रैफिक यू यूटिलाइजिंग इन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको जो है उसका दे रहा होता है कि what sort of basically threats or events in relation to the malware or antivirus we are seeing, और इसमें कैपेबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की, कंटिन्यूसली स्कैन कर रहा होता है सस्पिशियस एक्टिविटीज को, अनोमलीज को एंड पॉइंट्स पे। सिर्फ मालवेयर और उसको नहीं, लेकिन कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, एज आई सेड कि अगर आप फाइल शेयर कितने अरसे तक नहीं आपने टच किया, अगर आप एकदम जाके टच करते हो तो दैट इज अनदर सस्पिशियस एक्टिविटी अंडर दैट। और it keeps on कोई anomalies, कोई misconfigurations and all that, so it kind of flags those. By leveraging advanced heuristics, behavioral analytics, and signature-based detection, EPPs can identify and block malicious code before it can compromise the device or the network. So, worth spending money on that on those technologies? Well, that's another thing. ठीक है कि whether you can spend money on that or not, किस टेक्नोलॉजी पे करना है, ये आपके बजट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें ये कैपेबिलिटीज़ जो अच्छा हो, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया जाता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर, लाइक जब भी कोई प्रोक्योरमेंट अगर किसी ने काम किया प्रोक्योरमेंट में पहले कभी, तो उसको पता होगा कि any sort of solution or software when it comes down to buying that, तो जो procurement team है and it involves those technical teams and the management to have a POC, proof of concept उसका दिया जाता है, और फिर उसमें सारा डेमो होता है एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद उसकी फर्दर जो है हाई लेवल एंड फिर उसकी जो लो लेवल काइंड ऑफ डायग्राम्स एंड कॉन्सेप्ट्स उसको देखे जाते हैं, उसके बाद कहीं जाके डिसीजन लिया जाता है whether that is worth implementing that technology or not. इसी तरह इनमें ये solutions में they are quite competitive nowadays in the market, so many solution providers are out there, so you got to see which one is as per your requirement. ये नहीं होता कि स्टैंडर्ड चल रहा है जी उसको फॉलो तो उसको फॉलो कर ले, नहीं, एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपकी कंपनी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उसकी क्या ये जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड वेरियस सॉर्ट ऑफ endpoint solutions, antivirus, anti-malware, and it has to be that is not necessarily be on the network or not necessarily on the endpoint, but everywhere basically. A comprehensive sort of security protection, endpoint detection, and also network and the cloud. That's what we have discussed. But yeah, so we will move on to integrating these antivirus and anti-malware with security information and event management system, our SIEM systems. Next question, data aggregation basically. So we aggregate all the data from various sort of solutions, जिसमें anti-malware, antivirus solutions and behavioral analytical solutions, and also um, some DLPs, file share systems, whatever. So there are so many to aggregate the data from. But yeah,
The aggregation basically important in a sense that integrating this data with our SIEM systems would allow us to basically consolidate and correlate the information. So correlation makes sense there because without correlating this huge, tremendous data, for example, so many alerts, right, thousands of alerts, and from various sort of systems, like you cannot go manually and check each of them individually, right? And then compare them manually. So that's a donkey job. So all you got to do that aggregate the data at one place in a data lake or in your stream, whether it would be you can do it in Kibana and do the elasticity search and all these sort of things, or you can do it in the SIEM and then you can correlate that data, which makes sense. For example, any alert you got to investigate, you got to correlate the source of these alerts, and then obviously what kind of alert was it, whether it makes sense, whether it's false positives, false negatives, and those three sort of things. So it would be easy for analysis, right? That's what we come down to it now. So threat analysis, basically, by integrating antivirus and anti-malware data with SIEM systems, the Security Operations Center can perform in-depth threat analysis. The SIEM's advanced analytical capabilities can identify patterns, detect anomalies, and uncover complex attack campaigns that may have been missed by individual security tools, right? So this is one of the uh, major sort of benefits around that. So data aggregation, and then we do the threat analysis. And then in an event of an incident, we provide a better sort of incident response around that. If we have the data in one place, we can sift through the timestamps the incident happened, and then obviously we can check through it from the data from various sources of at one place. So that would be quite efficient actually. So it cut down a lot of time where you would be doing it manually and sifting through this. You can come down to a decision. So what to do with that now, how to mitigate it, right? And sort of things. So this in that sense is very important. Integration in terms of that why we integrating the data into our shames, and then how do we do the threat analysis around that data, and how do we develop our incident response plan, right? So, in regards to that threat intelligence and signature updates, right? So we have what sort of benefit we get out of these, right? We have the data, we have those alerts into one port, into one system, which is our SIEM, and then that makes sense. Like, what can we get out of that? So basically, that's we have that threat intelligence by which we can get a proactive threat detection, right? So by continuously incorporating the latest threat intelligence data, antivirus and anti-malware solutions can proactively detect and mitigate emerging cyber threats. This helps the Security Operations Center stay ahead of the evolving threat landscape and protect the organization's assets. So not only does it gives you a clear picture of what sort of threats we are getting, but also a greater picture of that through the threat intelligence data, right? So that these solutions would give it to you that how can they proactively detect and mitigate those sort of cyber threats or emerging threats, I would say. So that gives you a proactive edge on top of that. And then the next thing is the automated signature updates. So that's how you do um, you do it automatically or whether you do it manually. But the automatic updates are basically it's in a real time, right? And threats through the threat databases, through the vulnerability databases, and all that. So these antivirus and anti-malware solutions leverage automated signature update mechanism to ensure that the organization's defense are constantly up to date. This allows the SOC to rapidly respond to new virus and malware variants, reducing the risk of successful attacks. So obviously, that's pretty much self-explanatory that this would help us in combating those sort of threats, reducing the risk of successful attacks, and um, rapidly response to new virus and malware variants by automated signature updates, and plus centralized management. So, as I said, cloud-based and antivirus and malware solutions offer a centralized platform for managing threat intelligence and signature updates across the organization. So the cloud-based solutions, basically, that's the automatically updates, and they basically manage threat intelligence and signature updates across the organization through a centralized platform. And centralized platform is the one which offers you this sort of capability, this sort of benefit that it updates their systems automatically. And centrally you can manage each and every aspect of it and all your assets at one place. This streamlines the update process and ensures consistent protection for all endpoints, enabling the SOC to maintain a robust security posture.
Then it comes down to the monitoring, like all these big glass one pan frames, and um, flashy screens, and all these latest trends running on it, big maps and all that. So what all this? This is solely for real-time monitoring. Because some systems fails and it's not being monitored in a real time, that means security is flopped. So there we go. This is the reason why we should have this real-time monitoring in place, that the robust monitoring and reporting capabilities are essential within the Security Operations Center to maintain visibility into the organization's security posture and track the performance of antivirus and antimalware solutions. It does track their performance. They have the dashboards, they have the portals access given. The SOC analysts would be looking into it, and they continuously fine-tune it as per their performance. How does they perform? Whether they are giving you a lot of false positives, then and then true positives or false negatives, so then that means it's just not working as per your requirements, right? So you got to continuously monitor it, their effectiveness, their performance, the real time sort of threat, and then you would be fine tuning those systems as per your requirements. And also my year their obviously effectiveness in terms of whether it's reducing your incidents in your environment or not. So by continuously monitoring security events, alert triggers, and threat intelligence data, the SOC team can quickly respond to potential incidents and ensure the antivirus and anti-malware solutions are functioning effectively, right? And regular reporting provides variable insights into the security landscapes, enabling the SOC to make data-driven decisions. For example, if your security events or security alerts, it doesn't make any sense, or it's not reducing actually your security incidents, there is no point. So you got to generate the reports around that regularly and evaluate those their effectiveness on a continuous basis so that you can replace, fine tune, or get another sort of tool sets on top as an extra layer. So these sort of decisions you can take, and also to optimize security strategies and communicate the organization cybersecurity posture to key stakeholders. और इसी तरह आप की स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करते हो ड्यू टू दैट रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस, ठीक है? आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है सो दैट यू कैन कन्वे टू द स्टेक होल्डर्स दैट दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन. Best practices for the deployment or implementation of these solutions is comprehensive coverage. So you're not going to leave any loophole there. You're not going to leave any sort of area where they can sneak into your organization. So you have to make sure that wherever you are placing those systems is basically well-defined, and well, it should make sense where you're placing those systems, right? Whether it is firewalls or anti-malware solution. So first thing first, so that has to be your ensure comprehensive endpoint protection by deploying antivirus or other solutions on all devices. And it should be all devices, whether it's laptops, desktop servers, mobile devices. And this consistent implementation across organization is crucial for effective threat detection and prevention. Then it comes down to the automated updates. What's the point? You have had the comprehensive coverage, you have the state-of-the-art systems in place, but what if they are not updated? Their signatures are not updated, then there's no point. So signatures update होना बहुत जरूरी है, patches up होना बहुत जरूरी है for an implementation of a robust system. And it has to be automatically updating antivirus and malware signatures, right? You're not only doing it manually and all that, but it's directly connected with the signature database so that ensuring that organization defense stay current against the evolving threat landscape, right? So the current updates have to be there. Centralized management of these updates can streamline the process and ensure consistent protection. Right. And then comes down to the continuous monitoring. You have that comprehensive coverage, you have their automated updates in place. Then you got to continuously monitor those, right? In case of any failure, in case of any incident, or in case of any bypassing of these controls. So you would be monitoring that and report it, or get that alerts and prioritize them as per their severity levels. Then the integration of these security controls, obviously, this is again, you have to integrate it with the right set of tools like your SIEMs, and then so that you can have a correlation or whenever you require that data, so that would be available to you. So these are some of the best practices to basically implement these control sets. So yes, so in this one we have covered the malware and antivirus solutions in the context of Security Operations Center. And obviously we will have kind of real-time scenarios, or I would say a more depth study of these in the next few lectures. So thank you so much.